Good evening, everyone. Good evening, all. Hello, Bhupendra. Good evening. How are you? Is my voice visible to you, Bhupendra? Am I audible? Hello, Kripa. Good evening. How are you? Okay, so the topic we are going to discuss today is reading comprehension. Especially, I have just taken this topic as most of you have been asking continuously, like what should be the short tricks कि we should solve the question regarding passage, right? तो ऐसा नहीं कि passage के I'm great कृपा I'm very good, right? Through this video, actually, I just want to tell you, right, what are the best way to understand the passage quickly and how to pick the correct option so that हम बहुत कम टाइम में comprehension passages को अच्छे से understand करके और through elimination with the help of elimination हम correct answer पे पहुंच जाएं, right? This should be the our ultimate goal here. Okay, Rajat. Good evening, Rajat. Right. I think some of the students are yet to join. So you can see here, right? एक second, just let me take a key. I'll take a minute only. Continuously, I will take 2 or 3, classes on comprehension, so that हमारा ये जो comprehension skill है वो अच्छी हो जाए, right? सी देखिए हर स्टूडेंट एक अलग स्ट्रैटेजी यूज करता है, राइट? जिसकी रीडिंग स्किल अच्छी है उसे पैसेज समझने में बहुत इजी होता है, बट वो स्टूडेंट्स जिनकी थोड़ी सी रीडिंग स्किल वीक होती है, राइट, उन्हें थोड़ा सा पैसेज समझने में डिफिकल्टी आती है। इसलिए कि एवरेज स्टूडेंट को अगर मैं कंसीडर करूं तो योर स्ट्रैटेजी शुड नॉट बी लाइक कि यू शुड स्टार्ट विद रीडिंग द पैसेज ना। फर्स्ट यू शुड रीड द क्वेश्चन। आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, कृपा, रजत, आर यू गेटिंग व्हाट आई से? तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, जैसे इफ यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेट बुक्स हैव बीन द प्रोडक्ट्स ऑफ। तो अगर आप क्वेश्चन को माइंड में रखते हो देन यू स्टार्ट रीडिंग द पैसेज, राइट? या आप हो सकता है पहले पैसेज पढ़े हो फिर आप क्वेश्चन के आंसर दो, दैट इज ऑल्सो गुड इफ यू गोइंग लाइक दैट।
But while reading the passage, certain things you have to keep in mind. You have to understand the gist of the entire passage. You have to understand the tone of the author. You have to understand the kind of question. राइट रजत कृपा तो मैं आपको बता दूं जनरली दो तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्प्रहेंशन में जरूर पूछे जाते हैं वन इज रेफरेंस बेस्ड another one is inference based. Reference means whatever the author has written, that is a reference. Okay? And whatever we have to give by understanding the gist of the passage, that is inference. Inference is to be given by reader and reference whatever is written. It means reference is given by the author. Clear, Rajat? Kripa? ओके तो यहाँ पे जो अभी हमें समझना है वो क्या है कि क्वेश्चन पहले हमें तो समझना है अच्छे से कि हमारा क्वेश्चन क्या है ओके तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस द फर्स्ट क्वेश्चन इज great books have been the product of second में जरा let me check the pen yes ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है great books have been the product of great books have been the products means who produces these great books okay hello Sabha good evening राइट अब देखो यहाँ फर्स्ट लाइन में ही you can easily see great books do not spring from something accidental in the great men who write them. अब ऑलरेडी कह रहा है कि जो भी ग्रेट मैन हैं जो उन बुक्स को लिखते हैं उनमें अचानक कोई चीज एक्सीडेंटल नहीं प्रोड्यूस होती इट मीन्स ग्रेट बुक्स आर नॉट द प्रोडक्ट्स ऑफ द ग्रेट मैन एक्सीडेंटली तो फाइनली चाहे एक्सीडेंटली हो या नॉन एक्सीडेंटली हो बट it is now sure कि great books are the products of the great men who write them. Clear? Who write them. मिल गया हमारा क्वेश्चन का आंसर क्लियर तो इट मीन्स द ग्रेट बुक्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रेट men who are their writers mean who write them hence अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन करें देखिए हमें सबसे पहले एलिमिनेट करना चाहिए ग्रेट बुक्स हैव बीन द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सीडेंटल थिंकिंग ऑफ ग्रेट मैन गलत एक्सीडेंटल थिंकिंग ऑलरेडी ये कह रहा है कि ग्रेट बुक्स आर नॉट द प्रोडक्ट्स ऑफ एनी एक्सीडेंट राइट it means it is the product of something else but it is the product of great men it is sure it means great books are the products of great men who write them करेक्ट हुआ या नहीं सबा फर्स्ट का बी कृपा रजत नाउ यू हैव चेंज्ड योर आंसर्स इसलिए डोंट जंप ऑन द आंसर्स क्विकली अब बाय एक्सीडेंट तो हो ही नहीं रहा अगेन इट इज रिफ्यूटिंग बाय मेन हु इमेजिन समथिंग समटाइम्स ग्रेटली ये भी आउट ऑफ स्कोप है एक चीज हमेशा याद रखिए रजत एंड कृपा एंड सबा कभी भी आप आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन को कंसीडर मत करो अगर सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर किसी लाइन में मिल रहा है इट मींस इट इज रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन और जब रेफरेंस मांग रहा हो आपको तो किसी लाइन को रेफर करना है टू फाइंड आउट द आंसर उसके लिए आपको इन्फ्रेंस लेने की जरूरत नहीं है क्लियर सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ग्रेट बुक्स हैव बीन द प्रोडक्ट्स ऑफ किसका प्रोडक्ट है ग्रेट मैन के हमें आंसर मिल गया सीधे सीधे ग्रेट मैन हु राइट देम फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट एनी डाउट shall we move to the next question shall we move to the next question चलिए same way now I need answers from you all then I will discuss it now see passage is the same passage is there but the question is different if you see the second question is what does the words influence of their very core mean यहाँ पे influence of their very core mean right
इन वर्ड्स का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है? आंसर करिए आप लोग, आंसर करिए आप लोग। जस्ट मिनट यहाँ पे आंसर करिए। यस, second A, Kripa has gone with the option A. Rajat is also going with the option A. Sabah, okay, you think it's option A. You don't have to think, rather, you have to be sure. अब ये लाइन कहीं पे लिखी हुई है ना, ये देखिए सेकेंड लाइन ऑलरेडी, दे आर द एफ्लुएंस ऑफ देयर वेरी कोर, देयर मीन्स राइटर, great men. So it means these great books are the affluence, affluence means richness of their very core, the expression of the life itself of the author. यानी कि authors के life के expression हैं ये, right? It means these books, great books, are the products of the great men, they are authors. अब इसी सेंस में हमें इस मीनिंग को निकालना है, इन्फ्लुएंस ऑफ देयर वेरी कोर, तो एक्सप्रेशन विच इज द आउटफ्लो फ्रॉम द हार्ट ऑफ द ऑथर, अगर ऑथर के हार्ट से कोई आउटफ्लो हो रहा है जिस एक्सप्रेशन का, दैट इज द एफ्लुएंस ऑफ देयर वेरी कोर, ये लग रहा है आंसर, फिर भी हम बी को भी देखते हैं। एक्सप्रेशन विच इज द इन्फ्लुएंस फ्रॉम पीपल्स टॉक, पीपल के टॉक के सेंस में कोई बात नहीं हो रही, आउट ऑफ स्कोप है, एलिमिनेट कर सकते हैं हम इस ऑप्शन को। एक्सप्रेशन ऑफ थिंग्स दैट द ऑथर मे हैव थॉट ऑफ, तो ऑथर ने थॉट ऑफ किया है और उसी चीज का एक्सप्रेशन ऑफ थिंग्स, उन चीजों का एक्सप्रेशन है दैट द राइटर्स हैव थॉट ऑफ। नो डाउट ये कोरिलेटेड है, कोरिलेशन का इसका कोरिलेशन ये है कि वॉट एवर द राइटर थिंक्स ऑफ, राइट, उन्हीं चीजों का एक्सप्रेशन, तो चीजों का एक्सप्रेशन है डायरेक्टली ये ऑथर के लाइफ के एक्सप्रेशंस, यानी ऑथर के इमोशनल एक्सप्रेशंस की बात हो रही है, right? Because they are the affluence of their very core. Core means whatever the author thinks from his heart, whatever the author thinks of things from his heart, and that expression is called the affluence of the author or his core. Hence, A is absolutely the correct answer. Clear? A is the correct answer here. Good evening, Varsha. Right? अगर हम सी को देखें, एक्सप्रेशन ऑफ थिंग्स द ऑथर में हैव थॉट ऑफ, ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो जा रहा है। देन एक्सप्रेशन दैट द ऑथर रोट एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली तो पहले ही लाइन में रिफ्यूट किया जा चुका है कि एक्सीडेंटली बुक्स आर नॉट द प्रोडक्ट्स ऑफ द ग्रेट मैन, हेंस इट इज आल्सो एलिमिनेटेड। अगेन सेकंड का आंसर क्या हुआ? ए। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? वर्षा, I don't know what's the name of this fellow, PSKRE. Can you write your name here, please? Who has joined by the name of PSKRE? I'm just spelling this name. I don't know exactly who this is. रजत, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट? आपको क्लियर नहीं हुआ इसलिए आपने नो सर लिखा, या कोई डाउट नहीं इसलिए आपने लिखा नो सर? Okay, no doubt. Chali, that's great. So shall we move to the next question? Third question. Third question is before you. Literature cannot be said to have served its true purpose until it has been blank into the actual life of the person who reads. And we have to fill this blank.
Yes, we have to fill this blank with the given options: transfigured, transgressed, translated, transmuted. See whether it is reference based question, yeah, or inference based question. It might be given somewhere. Varsha, go with the third line. And literature cannot be said to have served its true purpose it has been until it has been translated. Already the word is given here. So if the word is already given there, so we don't have to hover over this question, right? So what is the correct answer here? A, B, C, D. Come on, everyone, give your answer. Yes, it should be translated is as it is already written. इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए समवेयर इन द लाइन, राइट? तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, इफ अ वर्ल्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ लिटरेचर, जस्ट थिंक कि ऐसा वर्ल्ड हो जिसमें लिटरेचर हो ही ना, what would happen to the broad, the noble, and the generous? What is going to happen to the broad, noble, and generous if this world is deprived of literature? I'll just find out somewhere it might be written. In the case of literature is not there or literature is missing in our society, then what is going to be the outcome? Yeah, it's a reference based question. Give your answers, please. रजत फर्स्ट सी, कृपा आंसर करो। फोर्थ लाइन देखिए, फोर्थ लाइन ये देखिए, इन अ वर्ल्ड deprived of literature, what is going to happen? The broad, the noble, the generous would tend to disappear, and life would be correspondingly degraded because the world, the wrong idea, and the petty emotion would never feel the upward pull of the ideas and emotions of genius. क्योंकि ऐसा वर्ल्ड जहां पे लिटरेचर ही नहीं होगा तो क्या होगा, राइट? तो जीनियस के आइडियाज वुड बी मिसिंग, एंड देन wrong ideas and petty emotions would fill the world. And then what will happen? The broad, the noble, the generous would disappear. Clear? Hence, C is absolutely the correct answer. Okay? I have just started with the basics. अब ये मत अज्यूम करना कि इसके बाद भी ऐसे ही इतने इजी मिलेंगे आपको ही। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल हम लोग की अप होती जाएगी इसमें पैसेज में। ओके, as you start getting comfortable with the passages, you will find the passages a bit more difficult. Okay, now moving to the next question. Fifth question of this passage. What is the function of literature? Just see if there is a function given. Quickly. Sabha says it's C. Good evening, Shripal. How are you? Yes, it's already written here. ये देखो, the function of literature is to raise the plane towards the top level of the peaks, right? So it is with the help of literature we can raise the plane
towards the top level of the peaks. Okay, and then answer is C. Is that clear? So it means the entire passage was very easy. All the questions were just reference based questions. So whatever were asked, we can easily find the answer there in the line somewhere. Okay, in the passage. तो ये तो पैसेज बहुत ही इजी था. अब आते हैं सेकंड पैसेज पे. फर्स्ट पैसेज was having just 5 questions. Now we are moving to the second passage, and second passage is also having 5 questions. ये थोड़ा सा पैसेज उससे बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा आपको इसके फॉन्ट्स थोड़े छोटे हैं बट विजिबल हैं. Right? Can you easily read it? I have already checked on my cell phone. It was readable. Actually, same way, first read the question and then try to see what should be the answer here. First question is, which of the following was mainly governed by superstitions? वर्षा, is it visible? वैसे मुझे तो सेल फोन पे बिल्कुल विजिबल दिख रहा है. आई एम ऑल्सो रनिंग माई सेल फोन along with the lecture just to see your comments and all. कृपा, सबा, वर्षा, रजत. ओके, कृपा का आंसर भी आ गया, फिफ्थ सी. श्रीपाल जी, अगर क्लैरिटी में प्रॉब्लम है तो यू कैन गो विद द सेटिंग्स. सेटिंग में होता है ना जहाँ पे ऑटो होता है, वहां पे आप एडवांस में आ जाइए. राइट हैंड पे ऊपर एक सेटिंग की बटन होती है, उस पर क्लिक करेंगे. राइट, तो सेटिंग में आप ऑटो लगा होता है, उस पर एडवांस पे आ जाइए. एडवांस पे आप हाईएस्ट पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है. ओके, सिक्स का सी. कृपा का आंसर है फिफ्थ सी. रजत सिक्स सी. Okay, the first question is, which of the following was mainly governed by superstitions? If you read the first few lines, superstitions are universal phenomena. Phenomenon का plural phenomena होता है. Having their own peculiar place in the cultural ethos and milieu. Milieu mean environment of a people. Of a people. It should be of the people. They epitomize man's fear of the unknown, fear of evil, blind faith in omens and portents. Superstitions are interwoven with myth, legend, and natural phenomena, and disaster, customs, and traditions, and are mainly the outcome of ignorance. तो यहाँ पे देखो एक चीज आपको और मिल गया, जिस्ट पैसेज का समझते चलना चाहिए. Superstitions are mainly the outcome of ignorance. इसका मतलब if the people are ignorant of things, तो definitely they become superstitious. इसका मतलब अगर हम ignorance हटा दें, if people are aware, तो definitely they are not superstitious, right? So they are unreasoned and irrational beliefs that gradually become matters of faith. When certain things and happenings are rationally explicable, people tend to assign mysterious and supernatural reasons for their operation. Thus, a natural disaster is explained in terms of God's wrath. क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर आता है तो कहते हैं भगवान का गुस्सा है ये. And the failure of one's project is assigned to the black cat which crossed the path just as one set out on their and mean work. The primitive human beings were mainly governed by superstitions. Again, simple lines में हमें आंसर मिल जा रहा है. तो it were the primitive human beings who were mainly governed by superstitions. तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, right? Which of the following was mainly governed by superstitions? तो these were primitive human beings. किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? Simple, it is reference based. कोई नहीं रजत, it happens. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पैसेज, यानी पैसेज के जिस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. If you have gone through the passage, if you have understood the gist of the passage, so you can easily find out the answer. Superstitions are unreasoned and rational beliefs. Superstitions are universal phenomena. First line में ही कह रहा, a natural disaster is regarded as God's wrath by superstitious people. ये भी correct है. When the people are superstitious, they treat natural disaster as God's wrath. Wrath means anger. And superstitions are also prevailing in Canada. Right? ये देखो थर्ड पैराग्राफ में, सुपरस्टिशंस आर नॉट ओनली यूनिवर्सली प्रिवेलेंट बट इवन हैव स्ट्राइकिंगली कॉमन फीचर्स वेदर बिलीव्ड इन इंडिया और इन एज फार ऑफ अ प्लेस एज कनाडा. इसका मतलब कनाडा में भी लोग क्या हैं, सुपरस्टिशियस होते हैं. तो इसका मतलब सी तो करेक्ट है, डी तो करेक्ट है. और सी की भी बात कही गई, ये देखिए, a natural disaster is explained in terms of God's wrath, ये भी करेक्ट हो गया. सुपरस्टिशंस आर नेचुरल यूनिवर्सल फेनोमेना, फर्स्ट लाइन ही कह रहा है, तो बचा कौन सा, ए. इसका मतलब ए इज दैट इज नॉट करेक्ट इन द पैसेज. व्हाई, यहां कह रहा है सुपरस्टिशंस आर अनरीजन एंड रेशनल, तो rather it should be irrational. You see, they are unreasoned and irrational. Whether it is written rational, is that clear? It is written here irrational and here it is written rational, hence it is incorrect. So what should be the answer here? Sabha, Varsha, Rajat, Kripa, what should be the correct answer here? A, right? Option A is the correct answer of seventh question. Any doubt? Clear? Any doubt? Shripal, Sabha, Rajat. Chale, moving to the next question. Eighth question. According to passage, which of the following is not regarded as a superstition by the people? You have to see what kind of acts have been regarded as superstition by the people, and then what kind of act should not be regarded as superstitions. देखिए, ये पैसेज, दोनों पैसेज बहुत ही इजी हैं. इसमें बहुत ज्यादा आपको लॉजिक एंड रीजनिंग नहीं लगानी है. हाँ, बट आई एम श्योर अब आगे जो पैसेज हमें मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल पे होंगे. इसका मतलब एक एक नॉच हम बढ़ाते जाएंगे डिफिकल्टी लेवल, राइट? ओके, वर्षा सेज इट्स ए, क्रॉसिंग अ पाथ बाय ब्लैक कैट. अरे कृपा, इफ ब्लैक कैट इज क्रॉसिंग द पाथ तो इट इज रिगार्डेड एज सुपरस्टिशन. ये तो कहा ही है. ये देखिए लास्ट लाइन, फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन देखो. ये देखिए, वन द फेलियर ऑफ वंस प्रोजेक्ट, अगर कोई पर्सन अपने प्रोजेक्ट में फेल हो जा रहा है तो इट इज असाइन टू द ब्लैक कैट विच क्रॉस द पाथ. तब यह कहता ना, ओ यार, बिल्ली ने तो रास्ता काट दिया था, यही तो कह रहा है. तो ये कैसे आंसर हुआ एट्थ का? ये तो सुपरस्टिशन माना ही जा रहा है ना. आप एग्जाम देने जाते हो, कोई पेपर अच्छा नहीं होता, अचानक आपको याद आया, हाँ यार रास्ते में तो ब्लैक कैट क्रॉस हुई थी, राइट? तो ये तो यहाँ पे सुपरस्टिशन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज नॉट रिगार्डेड एज अ सुपरस्टिशन, राइट? तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स हैव बीन रिगार्डेड एज सुपरस्टिशंस, उनको अलग कर दो. जो चीज नहीं रिगार्ड की गई है उसके बारे में बात करते हैं. ये देखिए, द क्राइज ऑफ certain birds like owls and
ravens, and the howls of cats are regarded with superstitions. Right? Clear? इन्हें तो हम superstitions मानते हैं as portent of evil throughout the world. And then there is a very common belief that the sighting of comets portends the death. Portent matlab predicts the death of kings or great men or some unforeseen catastrophe. Shakespeare refers to such a superstition in his Julius Caesar. Julius Caesar में होता है ना, cowards die many a time, the valiant taste the death but once. Okay. So what is the correct answer? Sighting of comet is also regarded as superstition. Then cries of children is not being talked about here. बच्चों का चिल्लाना कैसे सुपरस्टिशन हो सकता है भाई? इफ अ चाइल्ड इज क्राइंग, वैसे भी पैसेज के अकॉर्डिंग cries of children is not are not regarded superstitions, right? Hence B is the correct answer here. Any doubt, Shripal, Sabha, Rajat? एलिमिनेट किया करिए. देखो, जस्ट गोइंग टू द करेक्ट ऑप्शन बेटर है कि आप क्या करना शुरू करो, एलिमिनेट करो. पहले कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता अलग कर दो, जो बच रहा वही आपका आंसर है. हाउल्स ऑफ कैट की भी बात कर रहा है, राइट? हाउल्स ऑफ कैट भी रिगार्ड किया गया है सुपरस्टिशंस. ये देखिए, हाउल्स ऑफ कैट. क्लियर? Two more questions in this exercise. Ninth question. What can only be the effective counter of superstition? इस सुपरस्टिशन को काउंटर करने के लिए सबसे इफेक्टिव रोल किस चीज का है? सवा क्राइज ऑफ बर्ड्स. ये देखिए, क्राइज ऑफ बर्ड्स की बात कहां हो रही? क्राइज ऑफ चिल्ड्रन की बात हो रही ना यहाँ पे बी में. सवा वी आर टॉकिंग अबाउट क्राइज ऑफ चिल्ड्रन, नॉट क्राइज ऑफ बर्ड्स, राइट? Cries of birds are superstitions, but cries of children ना, हमारा क्वेश्चन था which is not regarded as a superstition by the people. तो बच्चों का रोना ये थोड़ी ना रिगार्ड किया गया है as a superstition, right? Clear? चलिए नाइन्थ क्वेश्चन पे आइए. What can only be the effective counter of superstition? Mean how can we counter these superstitions? Yes, answer please. Now, see, unenlightened people always tend to be superstitious. तो कौन से लोग superstitious होते हैं? Unenlightened. Unenlightened means those who are in ignorance. It means what kind of people are not going to be superstitious? Shripal says it's A. Your answers, please. चलो एलिमिनेट करो. एलिमिनेट करिए. कौन सा इसमें एक ऐसा है जो काउंटर कर सकता है सुपरस्टिशंस को, इफेक्टिव काउंटर हो सकता है? When we can make the people come out of their superstitions, what steps should be taken so that the people could not be superstitious? See, अच्छा बताइए, जूलियस सीजर के थ्रू अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे कृपा, तो जूलियस सीजर प्ले तो खुद ही सुपरस्टिशंस की बात करता है, राइट? कॉमेट की बात करता है. ये देखो, शेक्सपियर रिफर्स टू सच अ सुपरस्टिशन इन हिज जूलियस सीजर, राइट? तो ये तो ऑलरेडी प्रूव कर रहा है कि दिस इज अ प्रूफ ऑफ सुपरस्टिशन. और सुपरस्टिशन जो चीज ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, अगर उसी चीज के थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे सोसाइटी में, तो पीपल विल बिकम सुपरस्टिशियस. कृपा, यू आर गोइंग अगेंस्ट द आंसर. चलिए, एक्सप्लेनिंग द थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन. अगर हम रीइंकार्नेशन की थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे कि रीइंकार्नेशन मीन पुनर्जन्म, तो हम अगर ये कहेंगे हम पुनर्जन्म पाते हैं, इसका ये भी तो एक सुपरस्टिशन है, बिकॉज इसका कोई रैशनल
अप्रोच तो है नहीं इसको समझने का। अगर हम सैंक्टिटी ऑफ टाइम में विश्वास करते हैं, किसी चीज में सैंक्टिटी ऑफ टाइम, अगर हम टाइम समय पे विश्वास करते हैं भाई जैसा भाग्य होगा, सैंक्टिटी ऑफ टाइम मतलब भाग्य पे, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपरस्टिशन। And something that can counter superstition is broad light of scientific discovery. It means जब हम साइंटिफिक डिस्कवरी जो होती हैं उनका जब ब्रॉड लाइट हमारे सोसाइटी पे पड़ेगा तो हमारा जो अप्रोच होगा वो रैशनल होगा, राइट? विल स्टार्ट थिंकिंग रैशनली। भाई जब साइंस में आपका फेथ बढ़ता है तो क्या होता है, राइट? आपके सुपरस्टिशंस जो हैं माइंड से भागते हैं। अब अचानक हम लोग कहते हैं कि थर्सडे को घर से बाहर नहीं निकलना है, या दक्षिण दिशा में नहीं जाना है, साउथ डायरेक्शन में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? इसके पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। और अगर हमें साइंटिफिक लॉजिक मिल गया तो हमें बिल्कुल झिझक नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो देयर मस्ट बी सम लॉजिक बिहाइंड एवरी सुपरस्टिशन। और अगर वो लॉजिक से नहीं प्रूव हो रहा है इसका मतलब दैट इज सुपरस्टिशन, दैट इज नॉट लॉजिकल और रैशनल बिलीफ, दैट इज इरैशनल, अनरीजन्ड। Hence, A is the correct answer here. Agree, everyone? किसी को डाउट है ऑप्शन ए में? If you do have doubt, you can discuss here. Anyone, any doubt? Shall we move to the next question? And that would be the last question of the session. Which of the following is the main reason behind one's superstitions? Behind one's superstitions, what is the main reason? Fear of the unknown? या blind faith in omens and portents? Ignorance? या customs and traditions? Yes. Answer करो quickly. Very simple question. See, ignorance is whole passage is talking about ignorance, right? Rajat is asking, tell me the meaning of ulterior. Ulterior is something that is not clearly visible. He said there is some ulterior motive that he has behind his interest. अगर किसी का कोई इंटरेस्ट है उसके पीछे उसका कोई अल्टीरियर मोटिव है, इसका मतलब हिडन मोटिव that is not clearly visible. Rajat, got it? Yes. 10th का बी कौन आंसर? नहीं रजत, इट्स नॉट बी। अरे ब्लाइंड फेथ इन ओमेंस एंड पोर्टेंट्स करोगे तब तो सुपरस्टिशंस, राइट? मेन रीजन क्या होता है सुपरस्टिशंस के पीछे? व्हाई पीपल बिलीव इन ओमेंस एंड पोर्टेंट्स? बिकॉज दे आर इग्नोरेंट। वेयर देयर इज इग्नोरेंस देयर इज सुपरस्टिशंस, राइट? if you are ignorant of the things, if you don't have scientific thinking, if you don't have rational thinking, तो क्या होगा? You will become superstitious, right? Is that clear? So we had just 10 questions and we had just 22 passages. Okay, so shall we continue this practice again? I want the next two sessions about reading comprehension. If we are going to do two more classes of comprehension, तो definitely we are going to get some tricks and techniques. सिंपल देखो टेक्निक ट्रिक जो अभी तक इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया वो यही था कि सिंपली आंसर देने से पहले आप जो भी रॉन्ग ऑप्शन है पहले उनको एलिमिनेट कर लो। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, बट अब नेक्स्ट टाइम में जो आपको पैसेज मिलेंगे वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट लेवल पे मिलेंगे। इज दैट क्लियर? ओके एवरीवन, तो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, गेट देम बेनिफिटेड। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसका हम नोटिफिकेशन डाल देंगे एंड विल अगेन कंटिन्यू विद द सेम एक्सरसाइज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अ लिटिल बिट more and interesting passages. See you all. Good night. Bye bye.